Hello students, myself Suman Shekhavat and I am teaching economics in Gromore School, Himatnagar. Student, this is our fifth video for second chapter, Indicators of Growth and Development from economics subject and from 12th Commerce English medium. So let's start. The very first topics to be discussed in this video are growth rate of per capita income and then after limitation of per capita income. Before going to start the growth rate of per capita income, first we should know the meaning of per capita income. So let's understand. Per capita income or average income measures the average income earned per person in a given area, city, region, country, etc. It may be in a specified year. Okay, I think you understand. What do you mean by per capita income? Per capita income is calculated as the average and this is the income earned by per person. That means one person in given area. एक पर्टिकुलर एरिया में पर पर्सन कितना इनकम अर्न कर रहा है, दैट इज कॉल्ड per capita income, okay, for a specified year. Now it is calculated by dividing the area's total income by its total population. Let's understand with one example. For example, the total income of the area is $7,200 per month and this income is earned by 4 persons. That means we need to divide it by 4, this total income, and the answer is $1,800 per month. So this is the per capita income. This is not that every person earn exactly 1,800. This is an average income. Maybe one person earn more than 1,800 or maybe some persons less than 1,800. So we consider that the per capita income is the average income. Okay, so let's start and understand growth rate of per capita income. According to this indicator, when the per capita income of a country increase for a long period continuously, it can be said that economic development has taken place. That means student, according to this indicator, इस indicator के हिसाब से जब पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की इंक्रीज होती है फॉर लॉन्ग पीरियड, ओके, एक लंबे समय के लिए, वो भी कंटिन्यूसली, लगातार, तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम पर हेड. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट that per capita income is a average income per head, that means per person. ये हम पर पर्सन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पर पर्सन की एवरेज इनकम काउंट की जाती है, नॉट एग्जैक्टली द सेम. पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री. दैट मीन्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. पर कैपिटा इनकम को हम कैसे प्राप्त करते हैं? दैट द ग्रॉस नेशनल इनकम of a country divided by its total population, then we get the per capita income of that particular country. This indicator takes into account the population of the country too, and hence per capita income as an indicator is superior to the national income as an indicator. Student, in this indicator we include population, but when we talk about the national income we cannot include population. That is the limitation for the national income, that we are not include our population, and in this indicator we include population. That's why we can say that it is more superior. Okay, ये ज़्यादा बेहतर है नेशनल इनकम से एज एन इंडिकेटर. जब हम इंडिकेटर की बात करते हैं फॉर द डेवलपमेंट, ओके, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉर नेशनल डेवलपमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम, उसके कंपैरिजन में ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज बेटर इंडिकेटर फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके,
Now, the experts of UNO, that means United Nations Organization, have recommended it per capita income as an indicator of economic development. जैसे कि जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पर कैपिटा इनकम को रिकमेंडेड किया है, ये बताया है कि दिस इज द गुड इंडिकेटर फॉर टू नो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Just as national income, if per capita income is high and if its rate of growth is high, it can be said that development has taken place. अगर हम ये कहें कि national income और हमारा per capita income high है, इनकी growth rate high है, that means particular country का development हो रहा है या वहाँ पे development हो रहा है. If the country's per capita income rises at a faster rate, development is said to be fast. अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बहुत ही फास्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट भी फास्ट है. एंड इफ पर कैपिटा इनकम ग्रोस एट अ स्लो रेट, डेवलपमेंट इज स्लो. अगर उनका पर कैपिटा इनकम स्लो रेट पे ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स उनका डेवलपमेंट भी स्लो है. एंड इफ पर कैपिटा इनकम इज कांस्टेंट, देयर इज स्टेग्नेशन. एंड इफ द पर कैपिटा इनकम फॉल्स, डेवलपमेंट इज नेगेटिव. अगर मैं बात करूं कि पर कैपिटा इनकम अगर कांस्टेंट हो जाए या एक जगह पे रुक जाए, फ्रीज हो जाए या फिर वो नीचे गिरने लगे, तो हम ये कहेंगे कि डेवलपमेंट नेगेटिव हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. दैट मीन्स जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो एंड टू राइज द ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर विच द बेस्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम. तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जब हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी बेस्ट इंडिकेटर फॉर economic development or a human development especially. Now, if development does not improve the standard of living of the people in real sense, it cannot be called as development. अगर डेवलपमेंट में हमारे यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो रियल सेंस में हम क्या कहेंगे कि डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है. अगर लोगों का स्टैंडर्ड ही इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो डेवलपमेंट कैसे होगा. हैंस पर कैपिटा इनकम इंक्रीज लीडिंग टू फिजिकल बेटरमेंट ऑफ द पीपल इज कंसिडर टू बी अ गुड इंडिकेटर. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब फिजिकल बेटरमेंट होता है, जब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, तो वो कब होता है, जब किसी की भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा. That means this is a very good indicator. Rise in per capita income improves physical welfare of an individual, क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, पर हेड की बात करते हैं, पर पर्सन की बात करते हैं. दैट्स वाई पर्टिकुलर पर्सन का फिजिकल वेलफेयर होता है, उसका स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, एंड हैंस इट इज द रियल इंडिकेटर ऑफ economic development. That's why we can say that this is a real indicator of economic development. But every indicator has limitations, and this indicator also a lot of limitation, and the main limitation is this is counted as average. Okay, you remember that हम लोग इसको as a average count करते हैं. That's why we cannot identify the true per capita income. Let's understand more by the tabular form. Okay, its source World Bank and Economic Survey 2015-16 can be seen from the table that the per capita income of India in 2014 on the basis of purchasing power party is $5,497, which is lower than Norway, USA, China, Sri Lanka. Compared to Norway, India's per capita income is 11 to 12 times lesser,
and hence Norway growth is said to be higher than the India's by 11 to 12 times. Okay, let's understand this thing by table. That means in one column the countries' name are there. The first one is Norway, and then America, then Sri Lanka, then China, India, and Pakistan. In the second column, we know that the per capita national income purchasing power party in 2014 in US dollar especially, okay? And the last column, that is the growth rate of per capita income, okay? So let's understand this table that the Norway has a per capita income is 64,992 US dollar and their growth rate is 1.1. And when we talk about the America, their per capita income is 52,947 US dollar and its growth rate is 1.6%. And when we talk about the Sri Lanka, its per capita income is 9,779 US dollar and its growth rate 3.5. When we talk about China, 12,547 per capita income, okay, in US dollar, and the percentages for the growth rate 6.7. This is the highest growth rate. And now the China per capita income, we talk about the India, and its per capita income is 5,497 US dollar and our growth rate is 6.0. And when we talk about the Pakistan, the per capita income is 4,866 US dollar and growth rate is 2.6. So we can say that the Norway is the highest per capita income, but their growth rate is lesser. Okay, सबसे कम ग्रोथ रेट है उनकी, बट पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है. और जब हम बात करते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, तो नॉर्वे का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 11 टू 12 टाइम मोर है. ओके, बट जब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, तो इंडिया की ग्रोथ रेट ज़्यादा है और नॉर्वे की कम है. But the rate of growth per capita income is higher in India and hence the rate of development is faster. That's why we can say that कि हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट का रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. हालांकि हम उनसे बहुत पीछे हैं, नॉर्वे से, अमेरिका से, बट स्टिल हमारी जो डेवलपिंग रेट है वो बहुत ही अच्छी है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम. That every indicator has limitation, and for the per capita income, very first limitation is only estimates. Okay, this is the only estimates. How can we say that the national income of country is calculated almost every year? जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो लगभग हर साल कैलकुलेट होती है, and hence we get almost a corrected data. जब हर साल काउंट हो रही है तो हम हर साल क्या होगा, हमें करेक्ट डेटा मिलेगा. बट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज नॉट कैलकुलेटेड एवरी ईयर. लेकिन हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो हर साल कैलकुलेट नहीं होती है. इन इंडिया पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन वंस इन 10 ईयर. हमारे देश का जो सेंसस है, पॉपुलेशन सेंसस है, वो हर 10 साल में सिर्फ एक बार किया जाता है. Hence only an approximation is taken for all other years. जब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जिस ईयर के अंदर सेंसस होता है उस साल तो हमें करेक्ट डेटा मिल जाते हैं, बट जब हम आगे की ईयर्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट डेटा लेते हैं. हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई होगी, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं हमारी नेशनल इनकम से. सो per capita income is not accurate correctly. That's why we can say that कि हम लोगों को per capita income exactly नहीं मिलता है, because हम जो population लेते हैं वो approximate लेते हैं, अंदाजे से लेते हैं, exactly corrected नहीं लेते. Now the second definition, that is difficulty in the calculation of national income and per capita income. As we know that earlier we discussed about the difficulties in the calculating of national income.
because we are using national income in per capita income, so this particular limitation is applicable for this per capita income also. Already we have seen the difficulty in calculating national income. In the same way, whether per capita income should be at current price or constant price, and their related difficulties make it difficult to know the real situation. हम ये कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम में भी हम करंट प्राइस की बात करते हैं, कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. इन द सेम वे इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बिकॉज ऑलरेडी इन सबको कैलकुलेट करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. दैट्स व्हाई नाउ पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज. दिस इज अ वेरी बिगेस्ट limitation of per capita income. Okay, because we shows only an average. हम सिर्फ एक एवरेज शो कर रहे हैं. per capita income shows only an average income. On the basis of this average, no decision can be taken and the stage of development of countries cannot be decided. Okay, इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम एवरेज लेते हैं, कोई डिसीजन हम ले ही नहीं सकते कि पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज सम पर्टिकुलर पर्सन्स आर get very much income and some are not getting the too much good income. So that's why we can say that overall development is not taken place in particular that country. Okay, with increase in per capita income, it equitable income distribution takes place economic development. जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जो इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके बीच में इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. अदरवाइज इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज इनइक्विटेबल, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है, दैट इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस. तो हम ये कहेंगे कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि दिस इज नॉट द करेक्ट क्राइटेरिया. ड्यू टू दिस टू पर कैपिटा इनकम as an indicator is considered difficult. That's why we can say that कि as an indicator per capita income में भी बहुत सी problems है, बहुत सी limitation है, and this is the biggest limitation because we count only an average. Now difficulty in comparison also. When we talk about per capita income, it is very difficult in comparison. The per capita income of different countries are expressed in their रिप्रेजेंटेटिव करेंसीज. जब हम कंपैरिजन करते हैं पर कैपिटा इनकम की डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, तो हर एक कंट्री उनकी पर्टिकुलर करेंसी में अपनी पर कैपिटा इनकम को एक्सप्रेस करती है, बताती है. इट विल हैव टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर एंड देन कंपैरिजन कैन बी डन टू फाइंड आउट वेदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज रिलेवेंटली हाई और लो. पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो पर्टिकुलर करेंसी है उसको यूएस डॉलर जो है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद हमें कंपैरिजन करना पड़ता है कि हाँ वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या दोनों कंट्रीज के कंपैरिजन में किसका ज़्यादा हुआ है या किसका कम हुआ है. डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोज डिफरेंट कंट्रोल्स ऑन द एक्सचेंज रेट. अब हम ये बात करें कि देश अलग अलग जो देश है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर उनका अलग अलग कंट्रोल होता है. एंड रियल एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी नोन. हमें रियल एक्सचेंज रेट का कभी पता ही नहीं चलता है. एंड कॉन्सिक्वेंटली द रियल कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल अमॉन्ग्स कंट्रीज. दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है, एंड दैट्स वाई कंपैरिजन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. नाउ द फिफ्थ लिमिटेशन इज डिसेप्टिव इंडिकेटर. मीन्स जो हमें भ्रम में पैदा करता हो या गलत इंफॉर्मेशन देता हो, कुछ इस तरीके का इंडिकेटर है. कैसे? पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट्स. पर कैपिटा इनकम कभी भी एक्चुअल नहीं है. हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम आपने देखा 2014 में इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 5,000 US डॉलर. ओके, सो दिस इज द टू मच, बट
most of the persons not getting nearby 5,000 US डॉलर. हमारे देश के लगभग मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी होगी जो 5,000 US डॉलर के नज़दीक भी नहीं है, नज़दीक तो छोड़ के दूर दूर भी नहीं है. दैट्स वाई जो पर कैपिटा इनकम है ये डिसेप्टिव इंडिकेटर है, जो सिर्फ एक भ्रम पैदा करता है कि यस, बिकॉज हम बात करें कि हमारे देश में बहुत ही अमीर लोग भी हैं, लाइक रतन टाटा, मुकेश अंबानी, दोज हैव अ वेरी गुड इनकम. दैट्स वाई उनकी इनकम को हमारी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया जाएगा तो कुछ इसी तरह की हमारी पर कैपिटा इनकम आएगी. बट रियल सेंस में क्या है, वो मैक्सिमम पैसा कुछ लोगों के हाथों में ही है, बाकी तो सब पुअर है. ओके, so we can say that per capita income as an indicator hides more. ये ज़्यादा छुपाता है than it reveals and hence it is not correct indicators. वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा छुपाता है, बताता कुछ भी नहीं है. जो बताता है वो तो सही होता ही नहीं है. That's why हम ये कह सकते हैं कि ये correct indicator नहीं है. So student, thank you for watching my video. Stay home and be safe from COVID-19. Soon I will come with my next video. Bye bye.